YouTube channel All Rounder Ideas by Pratiksha, and my name is Pratiksha. So for today's makeup look, I am very much inspired from Maddie. I know यूफोरिया का नया सीजन आने वाला है, तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये लुक. दिस इज राइनस्टोन क्वीन का लुक विच इज मैडी पेरेस एलेक्सा डेमी, प्लेड बाय एलेक्सा डेमी इन यूफोरिया सीजन 2. आई थिंक ये उसका लुक है, मैंने देखा नहीं है, बस मैं बता रही हूँ. So I'm really inspired from Euphoria's makeup looks, and yeah, let's try this one today. I hope I will be able to achieve it. Now outfit I don't have. ये मेरे पास beige top है, I think which will go with the theme, क्योंकि जब आपका मेकअप इतना बोल्ड होता है ना, so you have to keep the outfit accordingly. And here we, I don't know if I'll be able to recreate the hair. ponytail, and yeah, let's start. मेन हमारा फोकस मेकअप पे ही रहेगा, और हाँ, आज मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने वाली हूँ विथ न्यू टेक्निक्स, एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग राइनस्टोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ये बैकग्राउंड पे कुछ नया नया है, सो आई होप आपको ये न्यूनेस पसंद आ रहा होगा. एंड मेरे चैनल्स के लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ सोच के रखे हैं जो कि बहुत यूनिक है. लेट मी नो अगर आपको और कुछ देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आपकी नज़र गई होगी इन पर. सो दीज आर माई नेल्स. ओके, सो ये है, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. ओके, so yeah, these are the nails. These are brown and उसके ऊपर कुछ I don't know what pattern this is called, but basically this is, I don't know, polka dot भी exact नहीं है, but yeah, something is there on it, white paint से, and base brown है, which I love. I think it's my OG कलर. आपने अगर मेरे ब्लॉग्स देखा होगा, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ जस्ट यूज दैट वन ब्राउन शेड. मैं उसका वो ब्राउन शेड भी यहाँ पे डाल दूँगी, किस नेल पेंट का मैं बात कर रही हूँ. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरा ये जो ग्लोई फेस आपको दिख रहा है वो रिंग लाइट के चलते दिख रहा है. मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है एंड मेरा फेस बहुत ड्राई है. सो लेट्स जस्ट टोन अप फर्स्ट. सो आई हैव दीज कॉटन पैड्स फ्रॉम Gov 20 essential grooming cotton pads, 80 pieces. I think this was for I don't remember कितना का था ये, मैंने Blinkit या अपने टेलर्स से मंगाया था. So yeah, so I'm taking one pad. Also cotton pad मैं ज़्यादा prefer नहीं करती हूँ, but ये I think these are good quality and environment friendly. I can be wrong, so if I'm wrong, please correct me. You can even use this kind of microfiber towel, clean करके reuse कर सकते हो for toners, for removing your makeup. मैं makeup remove करने के लिए बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करती हूँ, तो मैं फटाफट से टोन अप करूँगी. ओके, सो आई एम टोनिंग अप फ्रॉम दिस. यू ऑलरेडी सॉ, बट आई गॉट टू शो यू. अच्छा, मैं प्रोडक्ट बार बार दिखाऊंगी नहीं बिकॉज आई विल बी फोकसिंग ऑन द लुक, बट हाँ, प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. एंड इंस्टाग्राम और सब कुछ सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया का सब कुछ होगा डाउन बिलो. ओके, फोकस पॉइंट यहाँ करते हैं, गलत जगह, थोड़ा सा जूम इन करते हैं या थोड़ा और, बिकॉज तुम्हें फोकस कर. लेट मी नो आपको कितना जूम्ड इन, बहुत ज़्यादा जूम्ड इन पसंद है या फिर अच्छा ये ज़्यादा हो गया. ओहो, हाँ, दिस इज़ फाइन. एंड अभी लाइट कट गया है तो थोड़ा कम लाइट है, रिंग लाइट के भरोसे हूँ मैं, और एक बल्ब के भरोसे. सो प्लीज़ मैनेज इट. मैं जब भी शूट करने जाती हूँ तभी लाइट कट जाता है. सो दैट्स दैट. एंड बाय द वे, इफ़ यू आर नोटिसिंग दिस बैकग्राउंड, इस रूम का मेकओवर वीडियो जल्दी आने वाला है इन माई मेकओवर सीरीज. सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई new videos and like new series. एंड मैंने फेस वॉश किया था इससे पहले विथ
फेस वॉश जो कि मामा अर्थ का है, जो मेरा ओजी आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा। उसका मैं फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टोनर का भी फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी, विच इज़ फ्रॉम गुलाबी एंड यू कैन सी द डर्ट जो कि बचा हुआ था। आई थिंक हाँ, एक्सपायर्ड अभी नहीं है। मेरा फेस जल रहा था तो मैंने सोचा, कभी कभी गुलाबी लगाने से ज़्यादा कॉटन पैड से रगड़ने से भी मेरा फेस जलन देता है। सो मेक श्योर, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स। तो मेरा तो जलन देता है भाई। बट आई स्टिल प्रेफर यूजिंग इट बिकॉज हमेशा नहीं देता। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम this. I use this all the time. This is my favorite moisturizer. I've been using this since I think 4 years now, and I'm not kidding. मैं जब 9th में थी मैंने तब से ये यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड अभी मेरा 12th भी कंप्लीट हो गया है। सो यू कैन इमेजिन that. Oh, light आ गया and now you are gonna see good lighting जब तक ये बल्ब। बहुत ही अफोर्डेबल था। ये मैं किसी और वीडियो में यूज़ करूँगी, कोई मे बी फेशियल वीडियो में। अभी आई डोंट नीड इट क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह करती हूँ ये सब चीज़ें, आइसिंग वगैरह इन समर्स, नॉट डेली बट इन अ वीक। इतना डेली टाइम नहीं होता है ऑनेस्टली, तो इन अ वीक आई डू। और वेन एवर आई फील ऑनेस्टली आई डू इट। जब भी मुझे लगता है आई एम फीलिंग वेरी लो और आई एम फीलिंग लाइक माई स्किन इज़ नॉट like I feel tired, I do these things, gua sha and yeah. So मैंने कल ही किया है वो, तो मैं आज नहीं करूँगी because it is not recommended daily to use it, is what I know of. Correct me if I'm wrong. So yeah, and icing so you can do daily but I don't have the time. Main issue is the time. Okay, so now we need a lip balm. For that I use this. इसका कोई कंपनी नहीं है so, और ये ख़त्म भी है so you can use Vaseline or anything. I don't know if Vaseline is cruelty free or not. I have to search. I think so it is, but if it is not, please do your research. I only use and promote cruelty free products here on my channel. From I think the past 2 years I have been using completely क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। अगर गलती से मैंने इधर उधर ले लिया है या पहले से मेरा लिया हुआ है सो आई यूज़ इट, क्योंकि वो कोई मतलब सेंस नहीं बनाता कि मैंने उस पैसे डाल दिए और मैं उसको फेंक दूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट या वी कैन स्टार्ट फ्रेश whenever you know, whenever we want. So आपको अगर जानना है इसके पीछे का रीज़न, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई है। इट गेन्स वेरी लेस व्यूज़ बिकॉज इट्स द लीस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल of this generation especially. But yeah, if you are interested in using cruelty free vegan products, you can check out these videos. एंड सिर्फ मेरा वीडियोज़ ही नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्पिल बी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड ऑल्सो इफ यू सर्च व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो यू कैन गो, आपको ज़रूरी नहीं मेरा ही वीडियो देखना है। मेरा वीडियो आई थिंक बहुत लेस इंफॉर्मेटिव भी होगा, बट या ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विथ I think eyes करते हैं because eyes are the spot of this makeup. Okay, तो मैं पहले स्पंज भिंगा के लाती हूँ। Okay, I am back from so here is my sponge. देखो बड़ा हो गया है ये, डैम्प करने से मैं थोड़ा सा इसको वो उसका पानी को डैम्प करियो, अरे क्या बोलते हैं। हाँ, आपको एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, वेट नहीं ड्राई भी नहीं, ठीक है। डैम्प मतलब पानी निचोड़ा हुआ, ठीक है, पानी नहीं रहना चाहिए उसमें एकदम, नहीं तो प्रोडक्ट्स ब्लेंड नहीं होंगे, एंड बहुत ड्राई रहेगा तो भी प्रोडक्ट्स ब्लेंड नहीं होंगे। तो ओके, सबसे पहले आईब्रोज फिल करूँगी मैं, तब तक मैंने स्पंज कर लिया है। Okay, so the brush which I use, okay,
मैंने स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी, बहुत नहीं, बट या तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं स्पॉइलर एक दे चुकी हूँ ऑलरेडी, वो गुआशा वाला, पर और नहीं दूंगी, लिंक भी नहीं दूंगी, वो वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। एंड बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ ब्लैक आई शेडो एंड ए एंगुलर ब्रश for the following thing, for my eyebrows. So I'm just going to first outline it. ठीक है, you can see how I'm doing. सुनने से ज़्यादा ना देख के ज़्यादा समझ आता है, because our eyes are much more focused than our ears. Then I just simply fill in the sparse areas. I just fill randomly because I don't have very good eyebrows, as you can see. I really don't have eyebrows, which I don't like. Of course, who likes less eyebrows? ये देखो, यहाँ पे जहाँ बाल कम है, यहाँ स्पार्स है, सब भर लो, ठीक है। देन मेरा स्पूल ही पता नहीं कहाँ चला गया। Then I'll take my cotton pad and I will just clean up the ends, the corners, because eyeshadow tend to spread a lot, and especially when I just spoolied them. By the way, I spoolied them. दोनों eyebrows आज अलग लग रहे हैं ना, कैमरे पे अलग लग रहे हैं actually, not in real like that much. एक्चुअली कैमरे में ये वाला स्पार्स लग रहा है, सॉरी कैमरे में ये वाला ओवरफिल लग रहा है, बट इन एक्चुअल ये स्पार्स है, मतलब फिल्ड नहीं है उतने अच्छे से। कांट हेल्प, पूरा लुक होने दो। Okay, now I'm taking this my Mars Agori palette. I love this palette. Little ASMR. Agori, Agori. So I am gonna be taking, I have hit so many hands, and this happens when you shoot alone. मेरा भूत नहीं है, मैं ही भूत हूँ. So I'm gonna be taking a lighter shade to just highlight my brow area. थोड़ा सा इसको कम करो, yeah. So I'm just gonna be highlighting my these and also my lid. ये वाला ठीक है, उतना भी लाइट नहीं है, but so yeah. So. And by the way, today I'm not gonna be using any foundation because I just hate foundation. Not that my blending skills are not good. If you are thinking that my blending skills are nice, concealer is harder to blend than a foundation. So yeah, don't judge my blending skills. Can you see the difference in both the eyes when I carve out my brows and when I don't? When I carve out and when I don't. Okay. Okay. I'm gonna do the same on the other. Okay. So I've done both my eyes. Okay, now the fun part. पहले इसको set कर लेते because we are not using any eyeshadow today. I'm just going to use a transition shade because उससे set हो जाएगा. And transition shade I'm using this
Bihomi Bond the Wild palette. ये भी cruelty free है. I'm using this shade where I have hit the pan, of course. This was hilarious. Sorry, I'm gonna cut that out. तो आई डू माई यूजुअल ट्रांजिशन, क्योंकि बिना ट्रांजिशन के मैं कुछ भी नहीं करती व्हेन आई एम डूइंग एन आईलाइनर और एनीथिंग. इससे क्या होगा, जो मेरा कंसीलर है वो भी सेट हो जाएगा एंड इट विल नॉट क्रीज एंड ऑल्सो मेरा ट्रांजिशन शेड भी बन जाएगा. मेरे आईज में डेप्थ भी होगा. इट विल नॉट लुक वेरी लाइक नो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वेरी क्रीमी. इट विल लुक वेरी पेल. And I'm doing it with a very light hand. Just my aim is first is to just set the concealer. Too many fumbles, but my aim is to just set the concealer first, and then the second is to have a little color on my eyelids as a transition shade. And the fun part now comes, which is the eyeliner, जो कि यहाँ है ही नहीं. Let's do it with the eyeshadow. Okay, so I am feeling not black. I'm feeling this color today as an eyeliner. It's a very mauvish burgundy shade. I love this shade very much. I'll give you a swatch, okay? How pigmented. See, this is the shade, and it looks bomb as an eyeliner. I wear it many times. So I'm taking my angular brush. तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, अपना एंगुलर ब्रश में से जो भी ब्लैक आई शेडो उसको मैं देखो यहाँ पे साफ कर ले रही हूँ ऑन माई टाल. एंड नाउ आई विल टेक अप कंसीलर एज माई eyeliner बेस. सो आई एम टेकिंग वाइट बिकॉज जितना वाइट रहेगा उतना इट विल पॉप अप. ठीक है ना. एंड एकदम मोटा फ्लिक निकालना है. सी, लंबा मोटा फ्लिक होना चाहिए ताकि we could put on rhinestones on it. आपको जितना बोल्ड जाना यू कैन गो. मेरा इतना ठीक है, बट आई एम गोना क्लीन दिस अप. प्लीज डोंट स्केयर मी. ठीक है. आई थिंक दिस इज this is good. Now he angular brush में मैं लूँगी वही burgundy shade which I just showed you, and I'm gonna थोड़ा सा कंसीलर को ड्राई होने देना. मेरा हो गया इतनी देर में. and start stamping in. जैसे आप स्टैम्प करते हो ना, what do we say, इस आई शेडो को स्टैम्प करना on this concealer. You know what I think? This shade is losing its color on top of white concealer. It's not this shade and it's looking very bad, honestly. So what I'm thinking is just going with a black eyeliner. So yeah, I'm going to wipe this off.
a black liner would be killer because Maddie's signature is, I think her signature color is black. So let's go with black. Because ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि the burgundy shade is good but on top of the concealer it's losing its color. That's what I don't think. Maybe not you, I'm sorry. I am back, guys, with my eyeliner. This is sketch liner. I'm going to draw. जैसे wing बनाया था वैसे ही बनाऊंगी. आज किस्मत ही अच्छा नहीं. This is dried up. Okay, मैंने सुना इसको उल्टा करके लगाने से it just shows pigment. So let's just do that. And yeah, I hope pigment. थोड़ा सा इसको अंदर. Yeah, let's not try. Actually, it's very stiff. So if I show you, मैं ऐसे जोर से दबा रही हूँ तब इसका कलर निकल रहा है. But it is very, very, very stiff. So when I finally quit on this pen liner, I found this Blue Heaven liquid liner, which is bomb. This is an eyeliner. This is what I wanted. अभी मैं इसको और थोड़ा clean up करूँगी with concealer, but for now अभी यही है. Okay, my eyeliner is done, guys. I am loving the eyeliner, and now we need to do the most fun part, which is rhinestone. देखो मेरे पास rhinestone है ही नहीं, मेरी औकात भी नहीं. But Indians do wear something here, which is a bindi, not a rhinestone. ये हमारा ही चीज चोरी करके बस अपना एक नाम रख देते हैं rhinestone. See, I have a whole bindi box. I'm an Indian. We do have and I have such beautiful bindis. I can use this as rhinestone. See, I have plain ones also. I have colored rhinestones also. Today what I'm gonna do is, I'll tell you, wait a minute. So I'm gonna use this and this and so let's see. My eyeliner is सूख गया. ये बिंदी की क्वालिटी by the way not very good. I have a lot of creases in my eyelids, so that's also a problem for sticking these rhinestones. And the glue
We can actually use lash glue, but इतनी मेहनत कौन करेगा यार. Okay, so इधर लगाने से पहले, oh my god, it's coming. This look is coming. So I'm just cleaning this angular brush, and let's just clean our eyeliner a little bit and make it more sharper, more winger. Like, dude, baby, dude. Let's just clean it a bit. I'm going to take this. See, I'm just going to ब्लेंड कंसीलर, और बाकी बाद में ब्लेंडिंग करेंगे जब हम एक्चुअली अंडर आइज पे कंसीलर लगाएंगे. वो सब बाद में होता रहेगा. Okay, let's just put more bindi. टोन बिंदी तो सबके पास ही होता है. The only thing is bothering me is the crease on my eyelids. Oh my goodness. Let me know, do you want more recreation videos? The only thing is left in this look, actually two things. One is from my side, मैं इसमें अपना टच भी ऐड करना चाहती हूँ. So I want to curl my eyelashes, पर पहले से कर्ल करना चाहिए था before putting this. पर अगर मैं पहले कर्ल कर लेती तो मुझे rhinestone लगाने में दिक्कत होता. And if I do now, I can do it. I think I can do it. Okay, now just let's use mascara as soon as possible. Can you look at my lashes? But in real life, I can look at them. This was so difficult. Bomb left for my under eyes.
Oh, it is inspired from Maddie, so I'm not taking all the elements from her. I'm just doing the rhinestone out from her. I'm creating my own things which suit my face and what my preferences are and what I like. I hope this wouldn't offend anybody. Okay, so I have pigmentation around my lips, which where I'm gonna put some concealer and यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत pimples भी आए हैं, so I'm just going to hide them. And I'm going to set my eyes as soon as possible. I'm going to bake it so it looks highlighted. Then the rest of my face, मैं सिर्फ अंडर आई सेट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया, क्योंकि मैं रेस्ट ऑफ द फेस पे भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना बाकी है, जैसे कि कॉन्टोर एंड या एवरीथिंग एल्स. एंड जब तक मैं ये बेक हो रहा है तब तक मैं एक contour यूज़ करूँगी, which is this one from the same palette. I just love this one. Now I'm just dusting off the powder. I'm going to contour my nose, which is very important for this look especially. Maddie has a very contour, very sharp face, which I don't have from anywhere. I am a golu golu chubby kid. And I also love that, but for certain looks we have to achieve certain things. So for this look we need a sharp jawline, sharp nose, which we can achieve. That is makeup. What you don't have you can achieve. See my contour, chisel nose, and I'm gonna put concealer in between. I'm going to contour this huge double chin that I have. Okay, I use a blushed गलती से. Now I'm going to apply a very peachy blush because that's the need of this look. And I honestly don't have a blush blindness. I know a lot of people are gonna come for me, but I don't have. This much blush is enough for me. Okay, let's do some lip liner. I think a nude lip would be fine for today.
So I'm using this lip pencil from Aries. I'm going to overline a bit just here and here because Maddie has very full lips. And I don't.